हेलो, आवाज आ रही है? रास हेलो, Yes, sir. Good morning. good morning. So in this lecture, we will discuss about secure cell. Clear? That is secure cell. That is another security mechanism in cryptography, basically. Clear? Then we discuss some concept regarding Diffie-Hellman algorithm. Clear? That is another algorithm for achieving the cryptographic mechanism. Clear? So before going to discuss this topic, we just know what is exactly the secure cell. Clear? So as we all know, during the transmission, clear, when the messages are getting transferred from one end to another end, so there will be more chances of spoofing. Clear? So in that case, basically you can say the message may get affected, or you can say there will be a chance for this corruption of the data. Clear? So to avoid this problem, we just uses the spoofing, SSH, that is secure cell protocol. So it is a protocol basically for secure remote login. Clear? So when we perform the you can say login on the remote page. So if you access on the remote server or anything else, जैसे कि हम लोग telnet में करते हैं. Clear? So we just required a type of uh, communication that should be secured. Clear? The SSH is a protocol that is for secure remote login, and another we can say access over an insecure network. Clear? So two distinct. It is developed by the over here. Yeah. Later on, it is commercialized by SSH Communication Security Corporation, that is in Finland. So it is specified in a set of internet drafts. So this protocol consists of three major components. Clear? क्या क्या इसके major components हैं? You see.
पहला है SSH ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, सेकंड वन इज SSH यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, देन वी हैव SSH कनेक्शन प्रोटोकॉल. और if we talk about the SSH, मेरी आवाज आ रही सभी को? Yes, sir. Okay. If we talk about the SSH ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ये बेसिकली तीन मेजर कंपोनेंट है SSH प्रोटोकॉल में, सिक्योर सेल के अंदर. It provides server authentication, confidentiality and integrity with perfect forward secrecy. Where? So this is the major you can say mechanism for the SSH transport layer protocol, which provides server authentication, confidentiality and integrity with perfect forward secrecy. Then we have SSH user authentication protocol. It basically authenticates the client to the server. ठीक है, ये ऑथेंटिकेट करता है क्लाइंट को सर्वर से, तो एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराता है. फिर एक ऑथेंटिकेशन देता है क्लाइंट को विद रेस्पेक्ट टू सर्वर. ठीक है, इसके बाद जो थर्ड वन है SSH कनेक्शन प्रोटोकॉल. तो इफ यू सी SSH कनेक्शन प्रोटोकॉल, so it basically multiplexes the encrypted tunnel into the several logic channels there, which enables secure cell session, TCP port forwarding, tunneling, etc. So this is what about you can say SSH connection protocol. Clear? Now we come to the next slide of this. Okay, so if you see, this is exactly the type of packet format. You can say how the secure cell protocol architecture exists. So how the you can say what are the major components that assist with this secure cell protocol. So I'm just zooming it so that you can see it properly here. So okay, so if you see, I think now the diagram is visible to all of you properly. Yes, sir. Okay, so if you see this architecture, so initially the blue colored mark blocked in the starting phase. So you can see SSH user authentication protocol. Then पहला आपका जो block है, that is SSH user authentication protocol, which authenticates the client side user to the server side user, जो कि अभी हमने component में भी देखा था. We have then SSH connection protocol, which multiplexes the encrypted tunnel into several logic channels. Clear? ये क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है टनल्स को इनटू सेवरल लॉजिक चैनल्स में. क्लियर? मल्टीप्लेक्स करता है इनक्रिप्टेड टनल्स को. एक तरह से मल्टीप्लेक्सिंग का काम है, जो इन कई सारे टनल हैं, टनल को इनक्रिप्ट कराता है सेवरल लॉजिक चैनल्स के अंदर. ठीक है. देन वी हैव एसएसएच ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, that is the second layer basically in this block. So it provides server authentication, confidential integrity. It may optionally also provide compression. क्या करता है एक तरह से जो भी डेटा हमारा है, या क्योंकि लार्ज पैकेट आप ट्रांसमिट करेंगे तो स्पूफिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इट्स बेटर टू आप उसको कंप्रेस करके ट्रांसमिट करें. तो उससे क्या होगा, डेटा साइज भी रिड्यूस हो जाएगा और टाइम भी कम कंज्यूम होगा और स्पूफिंग के चांसेस भी कम होंगे. क्लियर? Then the third level is the TCP. TCP connection, TCP IP connection को ये establish करता है before data transmission in a secured way. So TCP IP connection is the third and fourth layer. That is the transmission control protocol, provides reliable connection oriented end-to-end delivery. ये सभी को पता है TCP के बारे में. Then we have IP. IP is the internet protocol which provides datagram delivery, access multiple networks. Clear? Now, if I talk about the SSH transport layer protocol, clear? Now, if we talk about SSH transport layer protocol, so you can see TLP is transport layer protocol in short. So it runs on TCP IP. When used over TCP, the server normally listens for connections on port 22. Clear? Then encryption of data, encryption of what? User data. Then server authentication based on
सिमेट्रिक हॉस्ट की, ये सारे मतलब इसके मेन आपके फीचर्स हैं, यू कैन सी क्लियर. So then we have integrity protection, that is the origin and data. Clear. So we have the integrity protection, that is also the part of this, that is the transport. आप सभी को पता है TCP IP layer में हमारा integrity is also there. Clear, क्योंकि connection oriented protocol होता है. Then we have compression of data prior to encryption. Compression means उस data को compress करेंगे अगर वो large length का है, ठीक है, prior to encryption. So these are basically transport layer protocol services that you may say. Then we have key exchange methods. तो कैसे key exchange होती है? That uses public key algorithm, symmetry encryption algorithm, message authentication algorithm, and hash algorithm. They all are negotiated. Clear? Then if we talk about SSH transport layer protocol, you can see how the packet exchanges takes place. So we have a client server model. So before the transmission takes place, we have, you can see, we have SSS establishment of TCP connection is there. तो पहले तो एक TCP connection establish होगा transmission से पहले. Clear? Then we have, okay, then we have SSS proto version, software version, that is clear. Then secure cell में जो भी आपका encryption के regarding कह सकते हैं, जो भी we use the proto version or software version, that is protocol version or software version, that will be exchanged from the client to server. Then server भी उसको respond करेगा for the same SSS proto version and software version, that is basically the identification string exchange. So this is what this is the string exchange, जो भी identification है string exchange का, that is exchange between server and client. Clear? Then we have algorithm negotiation, that is also exchange. Then you can say SSH message. Then we have KEXINIT, that is algorithm, that is used for the security basically, or you can say encryption. So algorithm is also negotiated and exchanged between client and server. So you can see. Then we have a key exchange. Clear? Key is also exchange, you can see. So in key exchange, you can see end of the key exchange takes place. So SSH MSG means message, new keys. तो जो भी की है वो आपका क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा रहा है, देन सर्वर से क्लाइंट की तरफ एक्सचेंज हो रही की. क्लियर? देन वी हैव द सर्विस रिक्वेस्ट. जो भी सर्विस जब की एक्सचेंज हो जाएगी, देन यू कैन रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस. दिस इज हाउ द ट्रांसपोर्ट लेयर packet may get exchanged. ठीक है? So this is what SSH TLP binary packet protocol, if you see. So in this basically, if you can see, we have a payload. Payload consists of the data. You all know. Clear? So payload exactly consists of the data as well as the header. So it is just compress first one. पहले इसको compress करते हैं कि data अगर long length का है तो you need to compress it initially. उसके बाद क्या है, we just apply some sequence number. Clear? PKD, PDL, अभी हम आपको बताएंगे ये सब क्या है. ठीक है? Sequence, then PKTL, then we have PDL, then compress payload, then padding. Padding आप सभी को पता है कि अगर हमारी लेंथ कुछ कम हो जाती है ट्रांसमिशन में डेटा की, तो उसमें हम एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करके उस लेंथ को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन, जिससे हमारा डेटा मेंटेन रहे. क्लियर? लेंथ हमारी मेंटेन है. देन वी हैव ए एन्क्रिप्शन मेथड ओवर हियर. सो जो भी कंप्रेस पेलोड कंप्रेस डेटा होगा उस पे एन्क्रिप्शन अप्लाई किया गया है. ठीक है? एंड यू कैन सी वी हैव ए मैक आल्सो, दैट इज एक तरह से एड्रेस है ये. क्लियर? Then we apply the ciphertext. We got the ciphertext from the encrypted and MAC address. We got the ciphertext. So
साइफर टेक्स्ट में हमारा जो है वही जो हमारा कन्वर्ट होने के बाद सिक्योर्ड वे में ट्रांसमिट हो रहा है, दैट इज द साइफर टेक्स्ट। यही हमारा एसएसएच पैकेट है जो ट्रांसमिट हो रहा है, दैट इज हैविंग द मैक इंफॉर्मेशन एंड दिस एन्क्रिप्टेड डेटा, दैट इज द साइफर। तो कंप्लीट आपका मिलके साइफर टेक्स्ट हो जाएगा क्लियर एनक्रिप्ट होने के बाद। ये देखिए जो पीकेटीएल है, दिस इज द पैकेट लेंथ, और पीडीएल है आपका पैडिंग लेंथ क्लियर। तो जो यहाँ पे हमारे पीकेटीएल एंड पीडीएल यूज हो रहे हैं, ये पैकेट लेंथ एंड पैडिंग लेंथ है क्लियर। Yes, So this sir. is how the you can say this is the flow diagram how the data get transfer for the SSH communication. So it is just the diagram you can see. This is you can say this is the packet formation how the packet get formed clear. Then we have यहाँ पे देख सकते हैं implements में लिखा है encrypt and MAC oblique authenticate paradigms that attacks exist when used with CVC mode clear. So we just uses the CTC method. Okay, so we have SSH TLP binary packet protocol. If you talk about binary packet protocol, so the encryption and authentication algorithm, encryption keys, IVs, MIS4s are all negotiated during the key exchange. Yes. Then algorithms and modes. This is AES, DES. ये आप लोगों ने पढ़ा है DES algorithm वगैरह, ठीक है। Symmetric key cryptography में भी है DES algorithm. Then CVC, CTR, etc. can be different in each direction. So before encrypting, the packet is random padded. तो encrypt करने से पहले वही हमने बताया ना, पैकेट को randomly क्या करना पड़ता है, पैडिंग बिट्स उसमें ऐड करनी पड़ती हैं टू मेंटेन इट्स लेंथ क्लियर। सो यू कैन सी द एनकोडेड पैकेट जो भी होगा दैट विल कंसिस्ट द पैकेट लेंथ, पैडिंग लेंथ, पेलोड एंड रैंडम पैडिंग, इतनी चीजें इसमें कंसिस्ट होंगी जो भी एनकोडेड पैकेट होगा, ठीक है। सो वी हैव देन मैक, दैट इज HMAC, जिसको हैश मैक भी कहते हैं। इट इज कंप्यूटेड ओवर द एनकोडेड plain text packet and an implicit 32-bit sequence number that is not transmitted prevents replay attack. मैक इज नॉट इनक्रिप्टेड। मैक को हम लोग इनक्रिप्ट नहीं करते हैं, केवल हम लोग पेलोड वाले डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं। मैक हमारा केवल एक तरह से कह सकते हैं जैसे हेडर हम कहीं अटैच करते हैं, वैसे ही मैक है जो अटैच रहता है डेटा के साथ, ठीक है। जैसे आईपी एड्रेस वगैरह होते हैं, वो डेटा को रूट करने के काम करते हैं कि डेटा हमारा कहाँ से किस सोर्स से या किस डेस्टिनेशन पे जा रहा है। तो इसी तरह से मैक को भी हम इंक्लूड कराते हैं, बट इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द इंक्रिप्शन क्लियर। सो मैक जो एग्जैक्टली होता है ये देख सकते हैं आप। सो मैक इज इक्वल टू मैक बेसिकली की कॉमा सीक्वेंस नंबर एंड इनकोडेड पैकेट, इतनी चीजें हमारी साथ में रहती है। की रहेगा, सीक्वेंस नंबर रहेगा एंड इनकोडेड पैकेट रहेगा। इफ यू टॉक अबाउट द टीएलपी की एक्सचेंज, हाउ द की गेट्स एक्सचेंज क्लियर, की को जो हम एक्सचेंज करते हैं, सो यू कैन सी ये डायग्राम अभी हम लोगों ने देखा था। सो ये देखिए ये जो हमारी कीज एक्सचेंज हो रही थी यहाँ पे। सो द की एक्सचेंज मेथड specifies, what specifies exactly how one time session keys are generated for encryption and authentication and how the server authentication is done clear। source RFC 4253 ये हमारा एग्जैक्टली एक तरह से कह सकते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए यूज हो रहा है क्लियर, दैट इज फॉर सर्वर ऑथेंटिकेशन। सो हाउ वी मेंटेन जो हमारी कीज यूज हो रही हैं, सेशन कीज that are generated for the encryption and for authentication and how the server authentication is done. So this is takes place in the key exchange method. Then we have SSH specification that allows alternative methods basically for key exchange, but it specifies only two versions of Diffie-Hellman key exchange. अभी हम लोग Diffie-Hellman भी पढ़ेंगे। Diffie-Hellman algorithm क्या है key exchange की, clear? You can see this
this is how the SSH TLP Diffie Hellman key exchange there. So this is exactly ये एक हमारा कह सकते हैं एल्गोरिथम का पार्ट है, क्लियर। सो अभी इसका हम बेसिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ही क्या है Hellman key exchange algorithm. I share you information of this, you get समझेंगे. Then we have a SSH user authentication protocol. If you see here, the key exchange. After the key exchange, the client requests a service by sending. ये देख सकते हैं जब key exchange हो जाता है, ये यहाँ पे key exchange जब हो गया, then we what we do? Then we just perform the service request. Clear? So after the key exchange, the client requests a service by sending. ये मैसेज सेंड करता है सर्विस रिक्वेस्ट के लिए पैकेट टू रिक्वेस्ट ईदर द यूजर ऑथेंटिकेशन और द कनेक्शन प्रोटोकॉल। क्लियर? तो ये हमारी सर्विस रिक्वेस्ट है जो क्लाइंट सर्वर की तरफ मूव करता है और ईदर द यूजर ऑथेंटिकेशन और द कनेक्शन प्रोटोकॉल। क्लियर? Then we have okay. So this is what about the packet exchanging of this SSH protocol. Then we have SSH user authentication protocol. Clear? So if we talk about SSH user authentication protocol, so each SSH authentication protocol basically runs over the SSH transport layer protocol. It assumes that the underlying protocol provides integrity and confidentiality protection. Okay, and then the protocol has access to the session ID. Session ID जैसे बेकर में दी हुई है source RFC 4252. This is the session ID for the communication. Clear? Okay. Then we have it supports three user authentication method. जो कि अभी हम लोगों ने देखा था public key, password and host based. तो public key तो required है, ये essential है. Then we have password and host based. This is optional. So the server controls which authentication methods it can be used. Clear? तो सर्वर की कंट्रोलिंग में ये सब होता है कि कौन सा ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करना है. देन वी हैव ए पब्लिक की. पब्लिक की आप लोग सभी को पता है, इसमें क्लाइंट सेंड करता है सर्वर को ए साइंड मैसेज कंप्राइजिंग दैट इज द सेशन आईडी, द यूजर नेम and the user's public key and some other information. Signature is generated using the user's private key. क्लियर? तो आप सभी को पता होगा कि डिजिटल सिग्नेचर एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे हम लोग ऑथेंटिकेशन को अचीव करते हैं. So that is exactly the signature part here. Clear? That is generated using the user's private key. Then we have upon message reception, the server checks whether the supplied public key is acceptable for authentication, and if so, check whether the signature is correct. जब मैसेज रिसीव होगा तो सर्वर चेक करता है कि ये जो पब्लिक कीज पे अप्लाइड हुई है ये एक्सेप्टेबल है ऑथेंटिकेशन के लिए कि नहीं है. अगर है तो ये चेक करेगा कि सिग्नेचर करेक्ट है कि नहीं है. अगर सिग्नेचर भी करेक्ट है, ऑथेंटिकेशन भी करेक्ट है, देन इट विल बी एक्सेप्ट. नाउ वी हैव द पासवर्ड. So the client essentially sends the username and the password in clear. So they are however protected by the SSH transport layer security. Clear? तो essentially ये जो भी पासवर्ड होगा वो सेंड करेगा. Then we have host base. Host base is what? This is analogous to the above public key method, but with per host. Public key authentication is based on the host that the user is coming from and the username on the remote host. Here, class, you all are also requested kindly mark your this chat box. Clear?
सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए. Okay, then we have SSH protection, SSH connection protocol. So if you see, this is how the connection protocol is done. So it provides the interactive login session. Then we have remote execution of command. Then we have forwarded TCP/IP connection. That is इसको port forwarding भी कहते हैं. Clear? Then we have forward X11 connection. Clear? So ये देख सकते हैं आप लोग कैसे हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है. तो क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो स्टेब्लिश ऑथेंटिकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर पे जैसे हमारा एक ऑथेंटिकेटेड कनेक्शन जब स्टेब्लिश हो गया, then it just request for the channel that is open on the server end. तो SSH मैसेज चैनल ओपन, एक मैसेज आपका कन्वे होगा क्लाइंट से सर्वर की तरफ that it is open to access or not. Clear? So सर्वर को ये रिक्वेस्ट भेजेगा it is open to access or not, so channel should be open for the data transmission. So इसके बाद अगर सर्वर अपना रिस्पॉन्स भेजेगा that SSH मैसेज चैनल ओपन कंफर्मेशन, कि हाँ एक कंफर्मेशन किया कि हमारा now the channel is available, now you can send the data. Then it will just client will send the data that the channel is available now and it is confirmed by the server. So data transfer will take place. So another request, another message will be sent, that is SSH message channel data from the client to server, and the server will respond with the same data, that is the it is another, you can say it is the type of acknowledgement. SSH message channel data in form of acknowledgement will get to the client from the server and so on. ऐसे ही आपका जितना भी डेटा होगा, मान लीजिए इसको हमने पैकेट पैकेट फॉर्म में ब्रेक किया हुआ है कंप्रेस करके. So all data step by step will get transmitted. So you can see this. This is the multiple data that is transmitted. Clear? और जब सारा डेटा क्लाइंट से सर्वर की तरफ एक्सचेंज हो जाएगा, clear, with proper acknowledgement by the server as well, then we have a closed channel. So we just means to say the client will send a closed channel request to the server that it just terminate the connection now. So these application implemented that channel multiplex into an encrypted tunnel. एक टनलिंग है बेसिकली, एक टनल बन जाता है जिसमें हमारे कई सारा डेटा एक साथ ट्रांसमिट होता है. क्लियर? और इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसमिट होता है. इसको मल्टीप्लेक्स चैनल कहते हैं. क्लियर? इसी को हम लोग मल्टीप्लेक्स चैनल कहते हैं जो कि एसएसएच में फॉलो होता है. तो चैनल मल्टीप्लेक्स इनटू एन इनक्रिप्टेड टनल. ठीक है ना? टनल एग्जैक्टली प्रोवाइड क्या करता है? एसएसएच ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल. ठीक है? So this is how the connection is transferring of packet is there. Then we have port forwarding or SSH tunneling, that is one of the most useful feature of SSH. ये बहुत important feature है SSH का, जिसको हम लोग port forwarding और tunneling कहते हैं. Using port forwarding, one can convert any insecure TCP connection into secure SSH connection. Clear? तो पोर्ट फॉरवर्डिंग में क्या होता है कि कोई भी इनसिक्योर जो टीसीपी कनेक्शन होगा उसको एसएसएच कनेक्शन के थ्रू सिक्योर किया जा सकता है. सो दिस इज द डायग्राम बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर. यू कैन सी वी हैव द क्लाइंट एप्लीकेशन and TCP entity on the client end. We have server application and TCP entity on the server end. So you can see they are client applications and TCP entity are exchanging the X data and it is exchanging the Y data over here on the server end. So this is exactly the unsecured TCP connection. Clear? So अगर हम इसको secure बना रहे हैं, we just use the port forwarding or tunneling method. You can see जब हमने इसको secured way में transmit किया, तो अब ये SSH tunnel के through transfer हो रहा है, तो ये secured हो गया. So you can see again client application SSH entity, then server application SSH entity. So they are just communicated through a tunnel. This is a tunnel is like a pipe. So data is getting access from this tunnel in the secured way. Clear? So through the SSH use. Clear?
सो आप देख सकते हैं टीसीपी में हमारा अनसिक्योर्ड था, दैट इज नाउ सिक्योर्ड थ्रू एसएसएस चैनल। सो इसमें हम लोग ये एसएसएस टनलिंग का डायग्राम है जिसमें डेटा हमारा सिक्योर्ड वे में ट्रांसमिट हो रहा है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग, पोर्ट फॉरवर्डिंग में भी हमारा लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस। So connection from the SSH client are forwarded by the SSH server to a destination server. Clear? So if you see now, so SSHL, that is how the message is getting communicated through port forwarding or local port forwarding. So you can see L stands for the local. Clear? SSH, you can say this is secure cell. Then we have source port, ये पूरा मैसेज ऐसे जाता है। then we have the source port, then destination host, destination port, then SSH host. So this is how the communication is done. So it is just the एक तरह से statement है जो हमारा जिस तरह से हमारा ट्रांसमिशन होता है। क्लियर? सो उसमें पहले सोर्स पोर्ट होगा, फिर डेस्टिनेशन होस्ट होगा, देन डेस्टिनेशन पोर्ट होगा, देन SSH होस्ट होगा। क्लियर? So connect with SSH to the SSH host, comma, forward all TCP connection, attend to the source port on the local machine to the destination port on the destination host, which can be reached from the SSH host. Clear? ये इसी स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन है कि पहले SSH to SSH host कनेक्शन हो रहा है, comma, forward all TCP connection, attend to source port on the local machine to the destination port on the destination host, which can be reached from the SSH host. So if you talk about the examples of this, so this is the example. You can see just taking यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है SSH is secure cell, L is the local port, 8080 at the port. You can see source port number here. Then we have a local host. Then we have 80. Then fesb.hr. तो इसी फॉर्मेटिंग को ये फॉलो कर रहा है। You can see this formatting is followed. इस फॉर्मेट को ही ये फॉलो कर रहा है। क्लियर? This is the source port. You can see 8080. Then we have destination host. That is the local host. फिर we have destination port जहाँ पे उसको जाना है, तो that is the port 80. Clear? Then we have SSH host. That is fesb.hr. ठीक है? तो इस तरीके से हमारा then we have SSH port forwarding और local port forwarding जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होता है। देखिए ये हमारा योर होस्ट है एंड दिस इज लोकल होस्ट। तो ये जो रेड कलर वाला ये लोकल होस्ट है और जिसके बाद ये थ्रू एसएसएस चैनल है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। क्लियर? सो आप देख सकते हैं वी हैव वही जो हमारा मैसेज था, दिस इज हाउ इट इज कम्युनिकेटेड फ्रॉम योर होस्ट टू द लोकल होस्ट थ्रू एसएसएस चैनल। क्लियर? Yes, तो sir. यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कलर्ड मार्क है वो एग्जैक्टली उसकी मीनिंग को रिप्रेजेंट, जैसे 456 है, दिस इज द 456 एक तरह से पोर्ट नंबर है। यू कैन सी द डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर एंड दिस इज सपोज द सोर्स पोर्ट नंबर ऑन द होस्ट। तो ये आपका सोर्स पोर्ट नंबर हो गया। पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन। क्लियर? एंड दिस इज द सिक्योर टनल और ये आपका लोकल होस्ट है। ठीक है? हाउ इट कैन कम्युनिकेट विद द लोकल होस्ट। और ये आप देख सकते हैं हाउ अगर हमारा रिमोट होस्ट को और इसको हम अलग कर देते हैं, सपोज ये देखिए अभी तो यहाँ एक ही में कंसिस्ट कर रहा था, अब ये अलग अलग हो गए। ये हमारा अलग हो गया रेड वाला पोर्शन एंड द येलो इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द रेड वन। सो ये दोनों अगर हमारे अलग हो जाते हैं और ये इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, सो यू कैन सी स्टिल वी गेट द कम्युनिकेशन but the tunneling exists between your host and remote host. Yes, while you are exchanging the data also from here to here, but tunnel exists between the secure tunnel is existing between your host to the remote host. Yeah.
So this is how the local port forwarding is there. Now if you talk about SSH port forwarding, that is remote port forwarding. अभी हम लोग local port forwarding पढ़ रहे थे, then we now remote port forwarding. This is another port forwarding category. So in this connection from the SSH server are forwarded via the SSH client, then to the destination server. So ये remote port forwarding के लिए है कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि SSH secure cell, R का मतलब remote, then we have source port, इसमें पहले source port रहेगा, then destination host रहेगा, then destination port रहेगा, then SSH host रहेगा. So it just connect with SSH to the SSH host, forward all TCP connection, attempt to the source port on the SSH host, clear? Then we have to the destination port on the destination node which can be reached from the local host. So इसी की explanation है कैसे हमारा पहले तो क्या करेगा SSH को connect करेगा to the SSH host से, then forward all TCP connection, attempt to the source port on the SSH host to the destination port on the destination host which can be reached from the local host. आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है. दिस इज द एग्जांपल. ये देख सकते हैं ये पोर्ट नंबर हो गया. क्लियर. सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, देन वी हैव लोकल होस्ट fesp.hr. clear. Now this is how the communication is done. You can see this is in remote port forwarding through SSH port forwarding. So remote port forwarding में the local host is accomplished for along with the your host. Clear. And we have a remote host. So the communication is done between the local host and the remote host. You can see with with a tunneling mechanism, that is a secure cell connection. Clear. And in another diagram you can see we have just differentiated the near host or the local host with the your host with the remote host. तो तीनों हमारे अलग हो गए. अब हमारा your host intermediate हो गया है. Still you are getting communicated from the near host to the remote host, but the tunnel exists between the your host to the remote host. Clear. यहाँ तक सबको समझ में आया ही. SSH cell, how the security may achieved in the transmission through SSH. Yes, sir. Okay. One more thing, I just want to tell you all that some students have their some fee related issues. Am I right? Yes, sir. Okay, so if they all are requested to kindly submit it as soon as possible if they have. Clear. Because in the list which I have got, so many students are there which are still have their pending fees. Clear. So in view of that, so one more thing I just want to clear you all that if your fee may pending, so you will not be allowed to take classes as well as your uh, quiz marks also get hampered. Clear. So इसको आप ध्यान में रखते हुए kindly submit your pending dues as soon as possible. Clear. And inform to the college or where you can see where your fee receipt. Clear. To the department so that we can update it. Clear. I think am I clear to all of you? Yes, sir. No? Okay. So I think most of you are having some this kind of issue. So kindly make it clear as soon as possible. Okay. So उसके बाद देखिए मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आपसे, we have now just going to clear you.
Okay, so you all are requested to kindly rejoin the session again for at least 5 minutes to 10 minutes so that just complete this topic clear. So I'm just sharing you the file again now for regarding Diffie Hellman clear. So I think it is clear to all of you. It is clear to all of you. सभी को दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है. ये डिस्टस सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट भी है जो कि हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे लेकिन अभी मैं आपको डिफे हेल्मन बता देता हूँ जस्ट वेट ओके सो यहाँ देख सकते हैं डिफे हेल्मन आपको दिख रहा होगा सामने इसमें ठीक है जो भी हम लोग बात कर रहे थे तो डिफे हेल्मन प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है की एग्रीमेंट है इसमें क्या होता है जो कि हम लोग एसएसएच में भी यूज कर रहे थे so two parties create a symmetric session key without the need of a KDC clear then establishment before establishing a symmetric key the two parties need to choose two numbers P and G clear these two numbers have some properties that is